TPR. Hi everyone, welcome to another episode of the TPR Pod. This is episode 129 with returning guest Asad, aka Daktar Saab. He was on the podcast most recently in our YouTube panel towards the end of last year, but before that, when he had his first appearance on the show towards the summer of 2020. In this episode, a lot has happened since his first appearance, so we catch up on everything he's done. He took an extended break from his YouTube channel, why that happened, dissatisfactions that he was feeling. He did something huge, which was he went back to practicing as a local GP, physician, doctor in an underserved area in Karachi. How that experience has been, what he's learned, how that's changed his direction for the future. We talk about that, talk about the state of healthcare in Pakistan, in Karachi, how people feel, what their perceptions are, and how he thinks he can work towards changing and improving conditions. It's a great chat. He's a very smart guy, and he's always had a clear idea of things that he's dissatisfied with and how he can work towards improving those conditions. So yeah, great episode. Check it out. It's a short one. There might be points in the episode where the internet is a bit uncooperative. We're a Zoom show. It comes with the territory, but you will be able to power through. So yeah, without further ado, episode 129 with Dr. Saab. I might look over here and start talking, but this is like on top of my water. Like none of this matters. Dude, you look like you've lost some weight. Is it true? It's true. I've lost a lot of weight. I lost 12 kilos. What? But keto, where my wife and I are. It shows आपके अलग से आपकी शक्ल अलग से निकल के आई है. Also दाढ़ी भी trim हो गई है. So that really that has a big impact क्योंकि वरना तो यहाँ तक थी. कल ही मैंने की है and I'm like shit ज़्यादा छोटी हो गई. But चलो ठीक है. How are you doing, dear Mr. Asad? Do you want the short answer or the long answer? It's a podcast. There's only long answers. लोग पहले से ही भाग जाने. I've been okay. I've been, if I use one word, I've been struggling with motivation, with finances, and with career choices and direction. कि क्या लेना है, क्या छोड़ना है, किस पे फोकस करना है, किस पे नहीं करना है. दिमाग कह रहा है कि सेटल्ड एक स्किल्ड चीज है उसकी तरफ जाओ और जो दिल है वो कह रहा है कंटेंट करो. तो last time we spoke, was it has to be more than a year ago, है ना? I think it was a year ago because वो round table थी हमारी वो उसमें. अच्छा हाँ नहीं उसमें तो था. Yes. But the round table was very specific. YouTube से आपकी क्या शिकायत हैं content creators. But the first time you came on the show was when Rizwan was also there. I think that was summer last year. 2020. When COVID was starting. हाँ अब तो खत्म हो गया. Now it's over. हमने सोचा. Now it's taking a weird shape. Yeah. So there were some things you were thinking. उस ज़माने में you were going to do the US application. I think that was still in process, and that was something you were like, that was a question mark in the horizon because हमारा being old people हमारा सवाल यही होता है ना बेटा आपका प्लान क्या है. And आपका प्लान में फिर ये था कि अभी देखते हैं अभी क्या होता है शायद चले जाओ. So I mean spoiler alert, so you didn't go to the US. I didn't go. I didn't make it. And it was I was expecting that I would. Things were looking in that direction. ऐसा लग रहा था कि चीजें उसी तरफ जा रही हैं. But जो मंजूर हो, जो fate में है वही है. I gave my best shot, and I know that I gave my best shot. I've applied again, but this time with the intent that this is my last application. I don't want to apply again. I want to fix myself in a place for a longer time. मतलब मेरा हमेशा जब से मैं MBBS खत्म किया है मैंने पिछले 6 साल से
मेरा करियर बस ऐसे ही है कि अगले साल ये होगा, फिर अगले साल ये होगा, फिर अगले साल ये होगा, और फिर ये होगा. Yeah. एंड नाउ आई एम कॉन्स्टेंटली इन दिस लिम्बो कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं अगले साल से आगे क्या कर रहा हूँ, बिकॉज नथिंग सेट इन स्टोन राइट नाउ. आई Right. वांट टू बी इन अ पोजीशन वेयर आई कैन बी लाइक अगले 5 साल में ये कर रहा हूँ बस. Okay. Okay. At तो least मतलब it's good to have yeah. some expectation. अब वो बदल जाए plan उन 5 सालों में वो एक अलग बात है. But at least तुमने how old are you? I've never asked you this before. Personal सवाल 30 थोड़ा. You're 30 30. now. Oh, acha. I was going to expect you say something younger. But chalo, that's good. You look younger than you are. Or maybe I look older. Acha. नहीं, how old are you? I'm 35 nearly. हाँ, you do look older than you are. No, all right. I once told a colleague, mazak mein, I'm 37. She's like, yeah, wow, you look great. I was like, it's a joke. Zaleel ho gaya fauran. Acha. So, why are you applying side sawal that nobody will be interested in? Why apply specifically to the US? Why not try UK, Ireland? अभी वो एग्जाम्स नहीं दिए, एग्जाम्स उसका एक अलग है, उनके जो Right. डायरेक्शन है वो पूरी अलग है, पूरा प्रोसेस अलग है. इनिशियली जब आप मेडिसिन कर रहे होते हैं तो यूएस इज प्रोबेबली द हाईएस्ट थिंग दैट यू कैन अचीव, कि आप उधर जाके डॉक्टर बनेंगे एंड यू विल बी लाइक हाईली ट्रेन्ड एंड एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट एंड बट बहुत वेल्थी एंड रिच एंड Yeah. सारी चीजें, a lot of things that come with that package. तो एज एन अंडरग्रेड मोस्ट डॉक्टर्स हैव दैट सेंस कि यार बस उधर के लिए अप्लाई करना है, उधर उधर के लिए एम करना है, और उसी भीड़ चाल में चल लिए थे. लेकिन समवेयर डाउन द लाइन आई रियलाइज कि वो सारा एक वो होता है, एक इल्यूजन ज्यादा होता है. एंड इफ यू वांट टू बी कॉम्पिटेंट एंड वांट टू बी रिच एंड वांट टू बी impactful in your in whatever way you can be, आप वो यहाँ रह के भी कर सकते हैं, लोग करते हैं. तो बट आई बहुत आगे जा चुका था उस पाथवे के अंदर. आई डेंट वांट टू पुल आउट बीच में एंड बी के हैव दैट रिग्रेट इन माय माइंड कि मैंने पूरी एंड तक नहीं गया उसके. There was a big gap around the late 2020, early 2021 period where Dr. Saab just vanished off the internet. Maybe it was the exam, maybe it was something else that you'll tell me. What was that situation about? So 2020 or 2021 के around, I interestingly stumbled myself into an opportunity जो कि मुझे लगा कि I should take up. I was working in a startup as the digital marketing lead, and it was very unique because मैंने वो formally चीज़ वो नहीं पढ़ी हुई है. And I was just like, let's take it on and let's see कि ये challenge की तरह लिया मैंने. I worked there for 6 months. Yeah. बड़ा मजे का एक्सपीरियंस था जी. No. बड़ा मजे का एक्सपीरियंस था, बहुत चीजें लर्न करने को मिली. गूगल से मैंने वो मार्केटिंग के कोर्स किया. अपने चैनल के ऊपर देखा कि यार इसको किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है. बट आई फेल्ट कि मेरे चैनल के ऊपर जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया, इट काइंड ऑफ बैकफायर्ड इन अ वे कि वो उस वक्त जो निकलता था वो इट वाज अ वेरी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ मी, वेरी अनसेंसर्ड एंड दानिश. हमारी केमिस्ट्री वो निकल के आती थी पहले हमारे उसके अंदर कंटेंट के अंदर, फिर वो एक फॉर्मुलेटेड सी चीज होती चली गई और वो बड़ा कहीं खो गया. तो आई फेल्ट कि जो मैं स्ट्रैटेजीज लर्न कर रहा था वो मैं इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर पा रहा था, बिकॉज डॉक्टर साहब हैड बिल्ट हिमसेल्फ वेरी ऑर्गेनिकली एज समवन हु इज वेरी अनअपोलोजेटिक एंड वेरी अनसेंसर्ड एक तरह से, और नॉट नेसेसरीली कि वो कुछ कैलकुलेटेड मूव करता है, वो बस करता है अपनी मर्जी से और वो हो जाती है चीज़ें. तो उस तरह से मैंने फिर उसको डिफरेंट तरीकों से अप्लाई करने की कोशिश की अपने चैनल के ऊपर, बट इट डिडंट रियली वर्क आउट. तो नाउ आई एम रिकैलिब्रेटिंग अगेन कि भाई किस तरीके से करना है. तो ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज बिजी विद क्या कहते हैं द मार्केटिंग थिंग. Okay. और फिर उसको मेरी कंटेंट के साथ और फिर पढ़ाई के साथ बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो रहा था. तो आई काइंड ऑफ स्टक विद वन थिंग फॉर अ व्हाइल. Right. What was the startup business? So it was a med tech startup called Doclink. Okay.
and it was do you want their name in the episode? yeah, because I think वो अभी उन्होंने बंद कर दिया है. Okay. They stopped मतलब उनका वो जो उन्होंने पैकअप किया है I think August में. Okay. It was a very depressing thing because I genuinely believed in it and मैं काफी मेरा वो पैशन एक तरह का था क्योंकि I really enjoyed thinking about that product that they were building और इसलिए मैं टेकअप भी कर ली वो एक रैंडम सी ऑफर उनकी लेकिन ये कि they stopped their क्या कहते हैं cooperations in August. So that I recently found out in October कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ. It was something that I was looking forward to Right. getting somewhere inshallah. लेकिन but So you were saying कि डॉक्टर साहब का content you felt थोड़ा formulaic होता जा रहा था. formulaic हो गया था. अच्छा. Do you have any examples of something where you're like something where you can say कि if you look at this is like an example of where I decided कुछ recalibration चाहिए. जी. So मैंने फिर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मेरा बिल्कुल वैसे it was just very organic. It was like about mental health, depression and जो लोग अक्सर mental health से सफर कर रहे होते हैं उनको पागल बोला जाता है. Right. तो उसके ऊपर बनाई थी and I felt that it did really well. I felt like people still liked the content and they were still listening. तो फिर मैंने उसमें एक्सपेरिमेंट शुरू किया जो मैंने डॉकलिंग से सीखा था. तो उसमें गलती मुझसे ये हुई कि कंटेंट वाज गेटिंग एक्सट्रीमली साइंटिफिक. Okay. जो कनेक्शन था डॉक्टर साहब से कि वो जो ऑर्गेनिकनेस होती थी, जो अनसेंसर्ड और अनफिल्टर्ड बिहेवियर होता था और जो दानिश के साथ जो केमिस्ट्री निकल के आती थी बाहर, वो ख़त्म हो गई थी. एंड देन आई वाज बिकमिंग टू फॉर्मुलेट बिकॉज आई वांटेड टू बिल्ड समथिंग लाइक वेरिटासियम या वो जो था एक वीसॉस टाइप का जो एक चैनल है जो बहुत डेप्थ में चला जाता है एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपको पता भी नहीं होता एंड देन यू आर स्टिल एबल टू अंडरस्टैंड इट. आई वांटेड टू रेप्लिकेट दैट एंड आई थिंक कि मैं उसके अंदर जब चलता चला गया एंड आई सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड टू पुश दैट यूजिंग द मार्केटिंग फनल जो मैंने सीखा था उसके थ्रू मैंने उसको पुश करना शुरू किया. तो वो चीज़ खुद ही अपने अंदर ही इम्प्लोड हो गई. I became too serious. There was no chemistry with the camera or the cameraman because Danish wasn't there. Or Danish wasn't there. Danish wasn't there. Danish had क्या कहते हैं trouble with his studio, and then he was trying to salvage that. Then he stopped. He packed up his studio. He moved into a new apartment. फिर वहाँ से उसने सब कुछ छोड़ा. Everything he left, and then he recalibrated his entire mind and started thinking and he'd be like यार अच्छा मुझे अपने content के ऊपर focus करना. And I couldn't take that away from him because he was trying to focus on his content for a very long time और वो कर नहीं पा रहा था. So eventually we had to part ways in that he couldn't contribute to the project anymore. तो वो chemistry नहीं थी, वो raw और वो जो uncensored unfiltered जो मैं निकल के आता था वो personality गायब हो गई थी. And I became too scientific. I became too technical. How do you know you became too scientific? Did people say? I felt it. अच्छा. I felt it. I was becoming too scientific. मैं बहुत डेप्थ में घुस रहा था, मैं बहुत मैकेनिक्स के अंदर घुस रहा था. I was explaining. एक मैंने वीडियो बनाई that I decided to completely trash because I was explaining how the heart works. And I was like, why am I doing this? Like, मैं क्यों किसी को बता रहा हूँ कि दिल कैसे काम करता है? They don't care. What they care about is how to protect that heart from heart attack and then heartbreak. That's what they care about. ठीक है? Yeah. So I kind of lost that way where I became a little bit dry, बहुत boring, and very very technical. तो वो थोड़ी सी देर लगा मुझे वो उससे स्नैप आउट होने में और समझने में कि मैं गलत डायरेक्शन में चल दिया हूँ. तो उस डायरेक्शन से ब्रेक करने के लिए भी मैंने डॉक्टर साहब एंड फ्रेंड्स निकाला था. That was my way of collaborating with people that I would not have been able to collaborate with if this wouldn't have happened. मतलब मैं काजी के साथ कैसे कोलैबोरेट करूँ अपने चैनल के ऊपर, या मैं शहजाद के साथ कैसे कोलैबोरेट करूँ अपने चैनल के ऊपर. तो that was a way of trying to build that, but वो नहीं बन पाई क्योंकि
the editing required a certain humor, a certain comedic timing. वो मुझे एडिटर में नहीं मिल रही थी. Completely stopped that. Coming back again to the previous वाला डॉक्टर साहब जिसके अंदर मैं थोड़ा सा फनी और वो होता था, एंड उसको मैं इस तरह से करने की कोशिश कर रहा हूँ कि रादर देन थिंकिंग कि मैं ऑडियंस से बात कर रहा हूँ या मैं अपने कैमरामैन से बात कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्रिटेंड एंड थिंक दैट आई एम टॉकिंग टू आइदर शहजाद और आई एम टॉकिंग टू दानिश and trying to make them laugh. So hopefully that brings up that old chemistry or that old spark again, inshallah. Yeah. Nee, so Dr. Saab and Friends, is that why you stopped? Because it wasn't like feasible with the edits? तुम्हें मजा नहीं आता? Because मुझे edit में मजा नहीं आ रहा था. अच्छा. I felt like the edits required a bit of a higher standard of sense of humor, जो शायद my editor for various reasons, and not to her, not to anything that was her fault, didn't have it. Right. Timing की होती है बातें. जी. तो वो एक ह्यूमर था, वो मुझे लगा था जेनजी में शायद मुझे मिलेगा, शहजाद में मिलेगा या बलाज में मिलेगा. तो उनसे मेरी कॉन्वर्सेशन हुई थी एंड दे एकोड द सेम थिंग कि आप जो सोच रहे हैं वही हम भी सोच रहे हैं कि एडिट कैन बी इम्प्रूव्ड. Okay. So I decided until I find someone that can do this the way I want to do this, I don't want to do this right now. Right. Acha. Then there was also that phase of, I think इसी साल का था ना, the Clubhouse phase. That was this year, earlier this year. I think that was interesting because you were also one of the, I don't know what it was, but it was all these people who sort of knew each other. Content creator मैं भी था, but like बाकी सब were, including you, were proper content creator types. And I don't know why we got on Clubhouse. I think Nazar invited me. Nazar pushed it because Nazar was in Canada और वहाँ पहले आ गया था. And was that like did that open doors for you in terms of just meeting new people like it did for me? It did. मेरे लिए ये हुआ कि so I feel people don't know how to use social media. कि वो उसको सिर्फ प्योरली और स्पेसिफिकली नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल करते हैं. और मुझे लगता है कि देयर इज अ वे वेयर यू कैन एक्चुअली मेक गुड लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप्स, जहाँ पर आप अपनी जो क्वर्क्स हैं वो अगर सामने रखें ना, तो जो उससे मैच करता है वो आपकी तरफ ग्रेविटेट होगा. And this is how I function on my Twitter, but I've tried not to do that anymore. This is how I function on my Facebook, and this is how I functioned on Clubhouse. और उसमें I was just unapologetically myself. So I felt that through that medium, Facebook भी और Clubhouse भी, मैंने इस तरह के दोस्त बनाए जिनको शायद मैं अगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती उनसे बात करने की, इस तरह से वो नहीं होती तो नहीं बना पाता. एंड इट हैपेंड सो कि मैं शहजाद से मिला पहली दफा, बारात से मिला पहली दफा, एंड आई डिडंट फील लाइक वी वर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. अभी when Shahzad was in Pakistan. When Shahzad was in Pakistan, I met them both for the first time एक साथ. Yeah. And it didn't feel like it was a first meeting. It was so comfortable. Yeah. And I know for a fact कि वो उनमें से आप हो, कोई और नजर भाई आ जाए, कोई भी आ जाए, I know for a fact कि वो उतनी ही comfort और उतनी ही chemistry रहेगी. Yeah. And I think YouTube को पाकिस्तान के अंदर, because पाकिस्तान के अंदर इतनी developed नहीं है, it needs to stay in that community phase for a while. Yeah. Before it becomes into this big blown industry thing. Yeah. तो जो कि वो हो गई है. But जो sense of community थी या जो sense of belonging थी, मुझे लगता है कि वो Clubhouse ने थोड़ी सी instill की, and it was a good pleasant surprise. Yeah, I think the common thing was also like everybody there was either a content creator themselves. Well, I think everyone was a content creator. कौन था? Soltafa, मैं, तुम, इरफान, Shahzad, Balaj, Mariam. Who was there who was not into content? कुछ थे, इनके extended दोस्त थे, Balaj, Shahzad वगैरह के. But mostly everyone there was. So there was that shared
I guess language या fabric या जो भी कहें आप उसको जिसके ऊपर वो बना. But हाँ, it was interesting because I've been being as old as I have revealed myself to be. 10-11 साल से मैं हूँ अब इंटरनेट पे. There was this one phase जब ट्विटर आया था और मेरी इन सबसे दोस्ती हुई थी. रिजवान, सखेल, these people, my wife, these all came from our Twitter No, phase. wait, हाँ you हाँ. found your Twitter. Yeah, bro. भाई की games ही ऐसी. Oh my God, that is amazing. But that was also like this period of it was a coincidental inflection point sort of thing. I had moved to the UAE. मुझे एक साल ही हुआ था and I was actively on Twitter. कि, oh, maybe I'll meet new people. But एक साल के बाद I met these guys. And my wife was moving back from the US उसी एक साल 2012 में to the UAE. Rizwan moved to the UAE. Sarkhail got active on Twitter. तो वो, it wasn't just that we were on Twitter. It was like we were all in this place. तो Clubhouse में भी, that's why so many people on Clubhouse. हम सबसे बात नहीं करते. But it was all these content adjacent people during COVID, early on, before Android people joined. वो सारी बातें, these come around, these moments कभी कभार in life where और I think वो जब अपने nascent phase में होते हैं ना ये apps, yeah वो तभी वो चीज develop होती है. Now Twitter and now I think Clubhouse अभी भी उसी phase में, yeah but Twitter is not a place to make friends anymore. I think it's no it is not. वो Clubhouse के में भी यार अगर वो आप एक डॉग पाइल का हिस्सा हैं तो फिर ठीक है. yeah फिर तो there are people on Twitter do meet still, but they haven't met recently. वो वही 5-6 साल पुरानी जान पहचान थी and they're like वो मुलाकातें हो गई. अब वो Twitter meetup वाला phase off हो गया. लेकिन मुझे वो उससे वो याद आता है कि वो इतनी स्टूपिड सी चीज होती थी. स्टूपिड से तो नहीं, लेकिन स्टूपिड सी इसलिए होती थी क्योंकि मैं देखता था, कहता था यार व्हाई एम आई नॉट अ पार्ट ऑफ दैट. Right. वो इंस्टाग्राम के मीटअप्स होते थे ग्लोबल. दे वर Yeah. इंटरेस्टिंग. Yeah. दे Yeah. built a community Yeah. Yeah. and Yeah. then completely let it go. They're like बस जाओ जो करना है करो. It became a वो ना पैसे got involved and then हाँ. it becomes like a race. But अच्छा, so you're trying out new things. Dr. Saab के साथ, original channel के साथ, you had some misgivings. There was some course correction. There was the US thing. Another big thing that happened was you decided to start practicing again, which is, I suppose there's two questions. Firstly, why weren't you practicing before? And what drove you to change that situation? तो यूजुअली होता क्या है कि जब ये प्राइमरी केयर क्लिनिक्स बनती हैं, खास तौर से मुझे तो प्राइमरी केयर ही करना है. नाउ आई रियलाइज दैट माय पैशन लाइज इन फैमिली Yeah. प्रैक्टिस. Yeah. तो जब ये प्राइमरी केयर फैसिलिटीज बनती हैं तो उसमें ये होता है कि या तो जो डॉक्टर होता है वो खुद इन्वेस्टर होता है उसके अंदर, ठीक है, एंड दे आर विलिंग टू बेयर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉसेस दैट कम विद इट until and unless then it starts building itself up again. दूसरी चीज ये होती है कि किसी और का बिल्ड सिस्टम होता है, इट्स रनिंग, इट्स फंक्शनिंग, इट्स वेल ऑयल्ड. आप आके एक जगह ऑक्यूपाई करते हैं टू लेसन द बर्डन, increase their revenue, and take a certain amount of salary and go back home. This opportunity was very unique because A, I didn't have a patient pool of my own. Right. B, this was an establishing एक organization जो कि प्राइमरी केयर, मल्टीपल कंसल्टेंट क्लिनिक्स, लैब्स, फार्मेसीज खोलना चाह रही है थ्रू आउट द सिटी एंड देन इवेंचुअली थ्रू आउट द कंट्री. Okay. So for them to trust me to occupy one of the spaces was a unique opportunity because young doctors को जिनकी अपनी कोई clientele नहीं है उनको इस तरह से जगह नहीं मिलती because they're focused on revenue generation and patients usually follow their physicians wherever they go. Yeah. तो एक trust factor होता है. तो मेरा अपना कोई baseline, एक कोई pool of patients नहीं था and I had to sort of build that using my Instagram and then doing these free of cost screenings ताकि लोग आएं और फिर उस तरह से I can sort of
establish myself as a practicing and a competent physician. तो अहद की जो मुझे ब्रांड वैल्यूज लगी वो बड़ी अच्छी लगी. They were serving a very जो मेरी ब्रांच है, they're serving a very poor socio-economic area, very extremely saturated जगह है वो, बहुत ज़्यादा condensed living है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं, बहुत कम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं ढंग की. तो it is less for यहाँ पे जो मेरा जो मोटिव बना वो ये था कि I want to feel like I'm impacting something. Initially when Dr. Saab started, the impact came back to me. मुझे बताया जाता था कि ये हुआ ये हुआ, and it was good, it was a fun feeling. But that sort of died down after a while. मतलब impact होता था, but या मुझे वो feel नहीं होता था, या it felt like कि बस ठीक है, लोग शायद ऐसे ही आपको अच्छा अच्छा बोल देते. But when I was directing, impacting the lives, I sort of enjoyed that back in when I was in AKU. तो मैंने कहा बस सही है, ठीक है ना, I just want to go back to the patients and work and just help them. So इस छोटे socio-economic area के अंदर at a very low price, trying to give them high quality care, I think it has been a very fulfilling journey so far, and I'd like to continue until I can. तो वो ये सबसे बड़ी वजह थी मेरी कि why I wasn't practicing was because there was no one who would take that risk, and then there were these people who believed in me and pushed me and gave me a space, so I take it. Why did they believe in you? I met the CEO, मेरा interview था, and we started talking, and it was just a very very casual, बहुत मजे का interview. The person himself was very social work type का, उन्होंने अपने ज़माने में किया हुआ था और करते रहे हैं. डायबिटीज सेंटर की बात कर लें या डिफरेंट किस्म की चीज़ें ना, तो he's been always involved in such things. Yeah. And so I think you sort of resonated in that. And then जब मैंने देखा कि social media following है, he felt like I can pull my patients through my social media, and the kind of person that I am when I talk to my patients, I feel that I'm very empathetic towards them. Yeah. तो उनको लगा कि कर लेगा, and we sort of, it was like we sort of need this kind of young energy in the corporate as well. So Yeah. उन्होंने वो उठा के, so amongst all the consultants that have like hundreds and thousands of patients का pool, I'm this like new person who's sitting there and just like दो लोग आ रहे हैं, चार लोग आ रहे हैं, but I'm happy. Yeah. No, because I was wondering when you said na, you were able to, attract people or advertise your place there through social media. So I was wondering, did they know that तुम्हारी social media following है पहले से? Were they surprised when it started working? Because this is a new thing. हाँ, this I told the CEO, मैंने उनको खुद बता दिया था, because I wanted, that is probably my biggest achievement in my life, so I have to mention it. Sure. Yeah. तो वो उससे काफ़ी वो उसी से इम्प्रेस हो गए थे, एंड ही रिवील्ड कि वो खुद भी इस तरह की चीज़ें करते रहे हैं, एंड ही इज़ वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स पेशेंट एजुकेशन. तो वो बस एक आई थिंक वो फ्रीक्वेंसी मैच कर गई थी कि लाइक लेट्स टेक दिस रिस्क विद दिस किड. Right. And thoda speaking of the people you were reaching, were people who are in that area या close enough कि वो तुम्हारे clinic आ सकें? Did you actually attract people from your account? Yes. So it's yeah, and it's even better because they initially लोग आते हैं, अब फिर वो बताते नहीं है कि वो कहाँ से आए हैं. वो ये मतलब जितने भी मेरे वो सोशल मीडिया वाले लोग आए हैं, वो आते हैं, फिर वो बैठते हैं, आपसे रैंडम बातें करते हैं, वो करते हैं, एंड टुवर्ड्स द एंड या मिडिल में आके बताते हैं कि हाँ आपका वो देखा था सोशल मीडिया पे, तब आए वहाँ. एंड इट्स इट्स गुड फॉर मी कि वो मुझे नहीं बताते, सो दैट आई don't have the opportunity to engineer my behavior towards them, and then I come across as someone who's genuinely talking. तो अगर वो होते या नहीं होते इंस्टाग्राम से, मैं उनसे ऐसे ही बात कर रहा था. तो काफी सारे ऐसे instances हुए, and most of them also referred their family members and other people around them. तो I saw कि ये एक अच्छा तरीका था कि सोशल मीडिया पे एक वो बनाना. इट्स अ लॉन्ग गेम, मतलब मुझे लगता है कि एक बड़ा लंबा उसका रिवॉर्ड है दूर जाकर, लेकिन अच्छा रिवॉर्ड है, एंड मोर कनेक्टेड to the community and the people, and I feel like this is exactly what I was made for. I was wondering because that वो वाली बात जो तुमने अभी की ना कि you didn't want your own behavior to change
based on कि वो ये तो मेरे followers हैं या जो भी हैं. Yeah, that is an interesting like situation that you might find yourself in. कल को तुम like you're famous now but you become like ultra famous ना, मीटअप के लिए आ रहे हैं लोग, बस से क्लिनिक है, हम पहुंच जाते हैं असद से मिलने और stuff like that. ऐसे ऐसा हुआ है? अच्छा. बिल्कुल ठीक है, आज आपसे मिलने आए थे, अच्छा जी ठीक है। Yeah, because then वही वाली बात है ना कि you won't not be affected by it. या तो you'll be like, fuck off, stop wasting my time, I'm here to do some work. और लगा बैठे बैठे एंड पेशेंट्स को देखो, खैर है मेरे फैंस आए हुए हैं. That's a weird, that's like there's no playbook for the celebrity practicing doctor. There is a playbook for the celebrity doctor, but they don't, they're not in clinics and hospitals. They're just celebrities who were doctors. And you're going like the other way. Okay, you became a celebrity doctor first, and now you're doing the practice thing. So I wonder how that'll be, because I have no examples. हाँ, लेकिन आई थिंक बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एक्चुअली. आई एम नॉट वरीड. मुझे लगता है कि सही होगा, इट विल बी Yeah, फाइन. yeah, एंड मोस्टली अभी तक तो बहुत रिस्पेक्टफुल रहते हैं लोग, एंड आई हैवंट हैड मच हेट. yeah. Also, your location, क्या तुम कहते garden में तुम कह रहे थे when you posted, where is it? It's in Gulberg, which is Gulberg का आपको पता है ना? Yeah, yeah, Federal yeah, yeah. हाँ, so it's not like किसी बहुत ही social media वाले एरिया में डिफेंस में है तो वो चलते फिरते लोग आ जाएं. Like people have to make an effort to go there. effort में हाँ, ठीक है. And how long has it been since you've been practicing there? 2 महीने हुए. 2 महीने हो. Every single day except Sundays, and it's been very positive. आज अच्छा, आज मैंने उनको छुट्टी का कुछ बोला था अपने सीईओ को. मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू द यूएस, आई हैव टू टेक माय एग्जाम. एक मेरा एग्जाम है अगले महीने. तो वो कहते हैं कि भाई कब आओगे? मैं टेल डे मई बाद. तो मैं आने का, वापस ज्वाइन करने का इरादा है. मैंने कहा यस, कंप्लीटली. I'm very much inclined to continue doing that as long as I'm here, and inshallah I would urge more of new doctors to actually just थोड़े टाइम के लिए, 2 घंटे 3 घंटे के लिए, बट जाकर ऐसी छोटी कम्युनिटीज में जाकर बैठे एंड try to see and try to find that पल्स. क्योंकि एक होता है कि ठीक है यार, आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, वो एक अलग चीज होती है, बट इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू फीड दैट ह्यूमन साइड ऑफ योरसेल्फ ना. कि वरना इमेजिन करें कि आपके पास एक बंदा है और वो कहे यार आई कांट पे यू, एंड देन यू हैव mechanisms installed to not have them inside. That Yeah. is not good for you personally. आपकी सोल के लिए अच्छा नहीं है वो. So I feel कि it's important कि कभी ना कभी आप थोड़ा बहुत बगैर पैसे का सोचें, गिव बैक करें. And I'll be going away for 2 months, 1.5 महीना 2 महीना, तो मैंने कोशिश की कि मैं डॉक्टर्स को रिक्रूट करूँ अपनी जगह पे कि आके वो बैठ जाए थोड़ी देर. But as soon as anyone heard कि there's no fixed salary and they just get to keep what they earn, nobody wanted to join. Yeah, yeah. I understand that, but sometimes I don't know. I just feel like people need to be a little more relaxed when it comes to all of these things. I mean, obviously, people might be thinking about their own financial requirements primarily. Okay, it also, I guess, makes sense. And also, it's not really as glamorous a job, perhaps, ke chotu sa clinic in Gulberg, as many people would want. But ye batao, then something interesting also happens now when you are exposed to people coming into you daily basis. The big thing, I just did a first aid course, a 3-day first aid course, so maybe, I'm also a doctor now. The big thing that they were stressing was that when some shit goes down and you're supposed to like go and help this person who's, done something or something's happened to them, there's a big challenge where they're unable to articulate कि उनके साथ हुआ क्या है या उनको मसला क्या है. So you face this now in real life when people are coming to you and they're not maybe medically literate and they have to convey to you and you have to understand what their issue is. So ek to, how was that experience? And dusra, I'm assuming that that's the thread
that leads you down to what your current thing is कि भाई हर किसी को diabetes है और किसी को पता नहीं है. ओके सो बहुत सारे लोग, हाँ, majority of the people, not even just people who aren't medically literate, but a lot of people are actually unable to specifically tell कि उनको हो क्या रहा है. बड़ा, और अगर वो थोड़े से भी medically literate हो जाते हैं गलती से, so they lead you in the wrong direction. तो उनको पहले से पता है कि मुझे क्या बीमारी है और आप इसकी दवा हाँ, देते हैं. आप इसकी दवा देते हैं. Yeah. मेरे पास एक पेशेंट आया, इज लाइक मुझे वर्टिगो है, and I'm checking him for vertigo and I'm just like, hold on, what do you mean when you say vertigo? Yeah. And उसने मुझे बताया, I was like, dude, this is not vertigo. ठीक है. Right. तो मेडिकल लिटरेसी भी कोई मतलब वो एक यू नो इज अ सब्जेक्टिव थिंग मेरे हिसाब से. व्हाट्स इम्पोर्टेंट एंड व्हाट्स इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर इज कि आप किस तरीके से अपने पेशेंट से वो चीज़ें उगलवा सकते हैं जो वो नहीं उगल पा रहा. Be it a kid, be it someone who is really old, Yeah. be it someone who can't speak, that's what you have to do. And that's where the empathy and the communication, the dedication to communication lies. Like instead of just coming to a conclusion, जैसे अक्सर डॉक्टर्स होते हैं कि वो लोग 3-4 बातें करते हैं, ठीक है आप ये लें और ये लें, ठीक है. Yeah. Yeah. जैसे एक पास जो वर्टिगो का पेशेंट आया था, उसको वर्टिगो की दवा दी जा चुकी थी, ठीक है, which is obviously not going to do anything to him. Yeah. तो एक तो ये बात होती है कि कम्युनिकेशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर. उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव दैट लग्जरी टू गिव माय पेशेंट्स मोर टाइम देन अ डॉक्टर हु इज वेरी बिजी. क्योंकि अगर मैं 5 घंटे बैठता हूँ, आई सी 5-6 पेशेंट्स, आई हैव मोर टाइम टू डेडिकेट टू ईच ऑफ देम. So that way I have more time to understand what they're trying to say and more time to think about what their problem is. सबके पास ये लग्जरी नहीं होती, तो people sort of wing it. और Yeah. देखते हैं कि बस चल जाएगा तो चल जाएगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा. Yeah. डायबिटीज की जहाँ तक बात है, तो डायबिटीज का सिचुएशन ये है, एंड I'd like to use this platform to basically educate anyone who's watching right now, जो कि अब बड़ा मुश्किल है कि 36 मार्क पे कोई देख रहा होगा. We're saving nobody. But maybe जब मैं क्लिप बना दूंगा इसकी, शायद वो देख लें. हाँ. It's extremely important to know कि लोग जब आते हैं ना आपके पास, वो कहते हैं कि मेरी शुगर चेक करते हैं, मुझे शुगर ज्यादा लग रही है, हो सकता है कि ज्यादा हो, which basically indicates कि people think that sugar and blood pressure and hyperlipidemia या or cholesterol is going to have symptoms when it increases. Yeah. But it doesn't. They don't have symptoms. What happens is that these thresholds जो हमने बनाए हुए हैं, ये बहुत arbitrary सी lines हैं. ये नहीं है कि 110 अगर नॉर्मल शुगर है, तो अगर 111 हो जाएगी तो आपको शुगर के सिम्टम्स होना शुरू हो जाएंगे. These are very arbitrary lines that we have drawn, so that we are able to catch something before it goes out of control. तो उसमें होता ये है कि and diabetes and hypertension do have their symptoms, but they come at a very higher and a very severe stage. Like if you're having symptoms, it's been a while. Or if you're having symptoms, either it's been a while or it's extremely severe for one reason. Yeah. ठीक है. तो जैसे कि सिम्टम्स आते हैं शुगर के टाइप 1 डायबिटिक्स में ज्यादा आते हैं बनिस्बत टाइप 2 डायबिटिक्स में, ठीक है. एंड पीपल विद हाइपरटेंशन usually experience headache when their blood pressure is somewhere around 180 or 190 systolic, which is way too high. Right. ठीक है. तो लोगों को लगता है कि सिम्टम्स होते हैं इन चीजों के, जबकि इनके सिम्टम्स है नहीं. एंड उस गलत फहमी की वजह से लोग ख्याल नहीं रखते, स्क्रीन नहीं करते, टेस्ट नहीं कराते, डॉक्टर के पास नहीं जाते. एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टेट ऑफ प्राइमरी केयर जो हमारे मुल्क में अभी चल रहा है, जहां पर आप एक क्लिनिक में बैठे हुए डॉक्टर को ट्रस्ट नहीं कर सकते, यू जस्ट नो कि अगर इसके पास से जाएंगे तो ये कुछ खराब करेगा. वहां पर जब प्राइमरी केयर को आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, so what you're doing is कि primary care doesn't exist for a lot of people anymore. Right. This is just tertiary care. आप directly जाते हैं और specialist को दिखाते हैं. And when that happens, अच्छा जरा break down the difference between primary, secondary, tertiary for मुझे सब पता है, but for the lay person.
1 2 3, ठीक है, प्राइमरी 1, सेकेंडरी 2, टर्शियरी 3। अब पहला स्टेप होता है, अगर आपको कोई बीमारी अर्जेंट केयर की जरूरत नहीं है और इमरजेंसी केयर की जरूरत नहीं है, तो पहला जो आपका जो सामना होता है डॉक्टर से, वो प्राइमरी केयर से होता है। प्राइमरी केयर जो है वो आपको इवैल्यूएट करता है, आपको आपकी डायग्नोस्टिक टेस्ट करता है, खुद ट्रीट करता है। अगर उसको लगता है कि वो उसके स्कोप से बाहर है, फिर वो उसको किसी स्पेशलिस्ट के पास भेजता है। या स्पेशलिस्ट अगर देखता है कि वो मैं इसको अब मेरे स्कोप में है, तो लेकिन मैं इसको यहाँ पर आउट पेशेंट में ट्रीट नहीं कर सकता, क्लिनिक में ट्रीट नहीं कर सकता, फिर वो उसको भेजता है। अब होता क्या है कि प्राइमरी और सेकेंडरी तो नॉन एग्जिस्टेंट हो गए हमारे यहाँ, वो डायरेक्टली लोग जाते हैं टर्शरी के पास, एंड टर्शरीज आर एक्सपेंसिव। राइट। अब होता क्या है कि जब वो टर्शरीज एक्सपेंसिव है, तो नाउ देर उनके दिमाग में है कि अगर जाएंगे तो तब जाएंगे कि जब सिम्टम्स है, जब कोई असल में मसला है, और अगर जाएंगे तो कोई मसला निकलेगा तो ही पैसे हलाल होंगे, वरना पैसे हलाल नहीं होंगे। ठीक है, या मतलब मैंने तो एमआरआई कराया, उसमें तो कोई बीमारी ही नहीं थी। ठीक है, राइट। तो वो एक जो कंसेप्शन हो गया ना, वो बड़ा खतरनाक हो गया। प्लस इंशाल्लाह अगर फॉलोइंग बनती है और इतनी होती है कि आवाज़ इतनी इन्फ्लुएंशियल होती है कि आप स्ट्रक्चर्स बना सकें, आप सिस्टम्स बना सकें या और ट्रेडिशंस बना सकें, तो I'd like to build a system for primary care. I'd like to build a system and a रिवाज for annual checkups जब आपको कुछ मसला नहीं है। Because preventive medicine is extremely important. And let me tell you something very interesting. Um, जो लास्ट हमारा वो हुआ था सर्वे, और जो प्रॉपर सर्वे हुआ था, सर्वे कहेंगे इसको या एक रिसर्च कहेंगे, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ओके। फाउंड 17 million diabetic patients diagnosed and undiagnosed in Pakistan. 17 million, एक हम्म। करोड़ 70 लाख। I think that was in 2019 या 2017, I don't remember specifically. अभी रिसेंटली एक रिसर्च कंडक्ट हुई है क्रॉस सेक्शन, एंड 22 नवंबर को रिलीज होगी या पता नहीं क्या था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कब रिलीज होगी, बट रिलीज होनी है। द नंबर हैज बम्प्ड अप टू 33 million पीपल। वाओ। 3 करोड़ 3 लाख लोग डायग्नोस्ड और अनडायग्नोस्ड diabetics in Pakistan. And why that is, there's a lot of reasons, या but सबसे बड़ी रीजन कि हम लोग की जेनेटिक्स ही वही है कि बेसिकली साउथ एशियन लोग या at a lower BMI are at a higher risk than a white person at a या higher BMI. ब्रो इधर नहीं है। हमारा जो यहाँ यूके वीजा एप्लीकेशन सेंटर है, उसके नीचे देयर इज लाइक सम डायबिटिक व्हाटएवर समथिंग ऑफिस, ये वो। whenever I've been there, usually there's been nobody. कभी कभार एक बंदा दो बंदे। I've met one, ये जो फर्स्ट एड बाय द वे जिन्होंने हमें फर्स्ट एड कराई है आंटी ने, द ट्रेनर, शी इज डायबिटिक। and apart from her, I have personally met no diabetic Irish people. Zero. Like it's just never come up. And पाकिस्तान में तो चलते फिरते आपको जिंदगी में, you're like, हाँ bro, इसको डायबिटीज है, ये नहीं खा सकता, डायबिटीज नहीं, शुगर है इसको, he turns into a block of sugar. मतलब वो यहाँ तो it's just not a thing. मिडिल ईस्ट में भी बहुत है, बट मिडिल ईस्ट में obviously their fast food consumption and diet is like bad. अमेरिका में शायद वो वाला होगा, the diabetes that's linked to obesity in white people because there are a lot of obese people there. बट उधर भी देसियों में है भर भर के डायबिटीज। बट देखिए ना, वही बता रहा हूँ मैं आपको कि बेसिकली ओबेसिटी एंड लैक ऑफ प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज इज व्हाट कॉजेज इट। या लेकिन अब बीएमआई की जो स्केल्स है ना, हमें कहा या जाता है कि 26 तक इज नॉर्मल, या 26 से ऊपर इज ओवरवेट एंड 30 से ऊपर इज ओबीस। या ठीक है, a person of South Asian descent with a BMI of 26 kilogram per square meter या is at a higher risk of diabetes than a white man of BMI 30 kilogram
per square meter. Yeah, like a couple levels above से भी ज़्यादा. जी, यानी एक Yeah. obese white आदमी एक normal weighted according to that scale, Yeah. normal weighted brown आदमी से कम risk पर है. Yeah. And that is insane to me. ठीक है. Yeah. And I didn't know that for a very long time. Like, मुझे अभी recently ये 2 साल पहले चीजें पता चली है. And it scares me because मेरा BMI was already well over the 26 वाला mark. तो एकदम से मुझे बस एक शॉक लगा था and I was just like I need to sort of strangle people into getting the the screening done because Yeah. it's way crazier than we think it is. But फिर always on the hunt for segues, bringing this back to where we started with your content wala scene, what are the learnings that you've had from this experience that you feel will guide future Dr. Saab content? Because पहले तो you were making things based on perhaps anecdotal research के ये इसकी ज़रूरत है, but now like it's in your face and you see real shit happening. हाँ, तो मेरा पहले जो अप्रोच था और वो हमेशा से था, which is why when दानिश का जो supervision left, I went back to it कि बिल्कुल scientific depth के अंदर घुसना है. I was basically a teacher of biology, then the motivator of health. Yeah. I want to change that in a way that rather than telling you how myocardial infarction happens and then what changes it brings and then what are the complications, I'd rather just tell you 3 things that you can do right now that will lower your risk of myocardial infarction, heart attack. Okay. So solution-based approach rather than a science and a explanation-based approach. A. B. I realize that people don't like to be bossed around. Yeah. Oh yeah. They We like saw that COVID में हमने देख लिया. they like कि आप उनको suggestion दे दें. हाँ. उनको आप दूसरे उसका आउटकम बता दें और थोड़ा सा उसको उस तरह से करें वो खुद ही सोचते सोचते वहां पे पहुंचे ताकि वो यो कि वो ये बोल सकें I did my own research. ठीक है. Yeah. तो वो बोल सके. तो that is what I'm trying to employ in डॉक्टर साहब के भाई हालांकि मैंने अभी ये किया है काफी मैंने I was very aggressive with the diabetes wali screening thing. I don't think it would work. This aggressive approach will never work. Yeah. I think people just need to be educated and then be incentivized to take educated steps. So currently for content, I'm going to go towards a solution-based approach. Yep. And for impact, I'm going towards a corporate training approach. Oh, very good. Yeah. So I'm going to see if that works out because I think there's space that needs to be filled and that can be filled. Yeah. जहाँ पर मेरी वो जो desire to create an impact वो भी fulfill होगी and financial वो भी growth नजर आ रही है मुझे उसमें. Yeah. Let's see how that works out. I'm building something towards that, and inshallah we'll post it in the future. And I'm sure one thing you will definitely perhaps encounter in the corporate approach is people who are very smart and who have done all the research और challenge करेंगे वो डॉक्टर साहब को कि अच्छा हमारे यहाँ तो लेकिन ऐसा. But I think it's good because corporate might mean people who are more educated, more financially able, but does not necessarily correlate के healthier or have better life practices. So yeah, that's good. And I like the तुमने word use किया ना, motivator of health. That's a cool thing, banner to put you on. ये मेरे bio में होना चाहिए. Like what are you like a lifestyle influencer? You're an actual lifestyle influencer. Acha, that's good. So the closing sawal was we know what's happening in a few areas. Exam hai, there's directions taking. How do you feel about the future of Dr. Saab Vagera and your own career now in terms of बात स्टार्ट हुई थी कि you're not sure कि अगले साल क्या होगा उससे अगले साल क्या होगा and you want like a stable path at least planned. ठीक है, wanted. Do you feel like you have it now or do you feel like it's closer?
मुझे लगता है स्टेबिलिटी और जो फ्लक्चुएंस है वो मेरे केस के अंदर चॉइस है. Okay. If I genuinely wanted stability, I would have abandoned something that wasn't stable. But I'm stuck with things that I believe in and that I want to give my best to. मैं अभी तक वो कर रहा हूँ. और चॉइस मेरी अब यही है कि अब अगर स्टेबिलिटी उन चीज़ों में नहीं है तो I'll move towards a stable path that I have deliberately chosen not to walk on अभी तक. So I feel कि at least in my case, I'm not saying कि ये सबके लिए होता है, but stability is an option for me right now. Right. Not a one-off या fate वाली चीज़ कि वो हो जाएगी तो हो जाएगी. And I sort of want to settle down, not get married or something maybe. I was gonna ask. There might be something in the works. I don't know. Exclusive. Breaking news. So, but yeah, I want to start growing as a doctor because अगर देखें वही बात है कि अगर मैं 1 साल इस क्लिनिक को देता हूँ सही से, ठीक है, तो कौन कहता है कि ये नहीं ग्रो करेगा? क्या कौन कहता है कि सक्सेस नहीं मिलेगी? डेफिनेटली आई थिंक कि अगर आप 1 साल एक चीज को इस तरह से देंगे, उसको अपना अच्छा पार्ट देंगे, अपना पूरी डेडिकेशन देंगे, आई एम वेरी सर्टेन दैट दिस विल ग्रो एंड वेरी सर्टेन इन इन सिचुएशंस कि मुझे शायद ट्रेनिंग के लिए भी ना जाना पड़े, even though training is required to be a good confident doctor, but the kind of patients that I see in the clinic are very repetitive and people that I can educate generally on diabetes or ये सब चीजें and screen them and treat them for that. So I think कि बस मुझे अब एक चीज पकड़नी है and I have to make that choice for myself, Right. which I have been unable to take. Yeah. Because I had certain dreams, certain aspirations that I was chasing that now feel very inconsequential and very बहुत petty से लगने लगे अब. Okay. In terms of what they offer and what I'm losing. So yes, stability is on the horizon and it's a choice. Yeah. How long do you think you can sustainably be a practicing doctor and a content creator and a trainer? Do you think there'll be a point where you'll have to choose? Yeah, do you think it's possible to keep a healthy balance के चलती रहें तीनों चीजें? Doctory, I think, will always be something that I will not do for medicine, not do for finance reasons anymore. Okay. Because मुझे पता है कि यार अगर नहीं चले तो नहीं चले, चल जाए तो चल जाए, लेकिन that isn't my primary concern right now. उधर से मैं पैसे कमाना चाह ही नहीं रहा, मतलब सोचता भी नहीं मैं उसके बारे में. लेकिन कॉर्पोरेट वाली चीज और कंटेंट वाली चीज से मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नजर आती है मिलते हैं. If that happens, I would like to make the process of content very automated, जहाँ पर script ready हो, shoots ready हो, edits ready हो, और बस upload कोई करने वाला हो. वो जैसा भी. और जहाँ तक बात आती है ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग में तो आपको सिर्फ बैठ के बातें करनी है, तो बेसिकली लाइक अ क्लिनिक विद 100 people. So I think it's sustainable. I think it's possible. I think it needs a little bit of capital to sort of inject into it to make things automated. एक दफा वो हो जाए तो फिर I think it can work. Yeah, no, hopefully. And I think it'll be very interesting to be a doctor who doesn't care about money. That might be, might allow you to pursue it in a purer manner, perhaps. Probably. Yeah. ठीक है. कोई और closing बात जाने से पहले कोई जरूरी ऐलान? If you haven't gotten yourself screened for diabetes, ठीक है जी. Doctor Saab, you know where to find them. Links will be below. Thank you as always. I was hoping to meet you in Pakistan, लेकिन अब क्या करें? We'll figure something out.